Once upon a time, in a world of numbers and dollars, there was a fearless rebel. She dropped out of the CA and then embarked on a journey less taken by into the realm of content creation. With a quirky charm and unruly wit, she captivated the hearts of over 1 million followers, turning finance into a sensational dance of excitement. Now, as a proud queen of taxation, she runs a consultancy company, taxationhelp.in. So excited to welcome the one and only Neha Nagar. Thank you. Thank you so much. Thank you, Neha, first of all, for doing this. I know you have a small baby at home, and yet you're taking out the time to do this, so it means a lot to us. But Neha, when we do these sessions, we usually send out the guest profile to all our schools, and then they send out the questions. We've compiled a list of these questions for you. And with your permission, the first question, which was very, which was asked majorly, was that you embarked on a journey to crack what is one of the most toughest examinations in the country. And then you dropped out of that and then decided to educate more people in the world of finance. What was that phase like when you took that decision, and during this transition, how did your family react? How did you decide to embark on this journey? It was very challenging, first of all, to pick a course like CA for myself, because I came from a rural background. So I had my primary schooling in village only. But then I thought, let's do something big for myself. So I took commerce in my 12th, and for every commerce student, something big is always chartered accountancy course. So I took that. I cleared for few levels, but then I couldn't clear actually afterwards other levels of chartered accountancy course. So then, after failing multiple times, I had to give a thought to myself that if I need to give another attempt, or should I take something else? Is it actually made for myself or not? So I questioned myself. The process of questioning myself, giving attempt was very difficult. I had many self-doubt. Family wasn't supportive. They actually lost hopes in my career, and then I thought कि चलो ठीक है ये नहीं हो रहा है, let's try something else. So and I had to actually take admission in MBA, but because of fees I couldn't take, so I had to take a drop year, and in that drop year I started working for a BPO, and there I earned some money, and from that money I paid my MBA wali fees, and then I got admitted. Then I got admission in MBA college. So that's how I did my MBA. Chartered accountancy नहीं हुआ, so MBA करके at least एक normal सी job तो पकड़ ही लेते हैं, because doing nothing doing something is better than doing nothing. So that was my actually early career phase was like this. I was constantly trying something new. CA नहीं हुआ, MBA कर लिया, BPO में job कर लिया. I tried modeling also. I tried multiple jobs, and after MBA, I got actually placed in a very good company, IIFL Securities, which was into the stock market. And then I got very attracted to finance, stock market, investing, wealth. I was into wealth department. So that's how my journey into finance actually began. And after working over there for 1.5 years, I realized let's work for myself. I worked under a chartered accountant during my CA course preparation. So I thought, I know some idea filing, GST and everything. Let's start something of my own. So that's how I started my taxation help firm and named it as Taxation Help. So I started giving consultation to clients over GST, because there was many confusions among clients for GST, whether they should take it or not, which companies should pay or should not, किस पे applicable है, किस पे नहीं. So I started giving consultation. It was doing very well. Then lockdown आ गया, and then I had to take a break from everything because सब कुछ बंद था, client place I couldn't visit, and whenever I used to call client, they used to say कि अभी तो सब बंद है, we can pay for GST or anything. तो सबने GST बंद कर दिया, ITI filing के वक्त भी ऐसे excuse देने लगे. So then that was the time जब हम सब कुछ explore कर रहे थे, नई चीजें, कोई दाल गुना कॉफी बना रहा था, कोई dancing, कोई cooking, कुछ नया explore कर रहे थे. So I was also watching a lot of TikTok, a lot of Instagram, a lot of YouTube.
देन आई रियलाइज कि ये जो कुछ इंटरनेट पे इतना सारा कंटेंट है, यहाँ पर कुछ हो सकता है. एंड आई रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ कंटेंट क्रिएशन, कंटेंट क्रिएटर इकोनॉमी. And that's how I thought, chalo, let's give it a try. I know finance only, so let's start with the finance only. I cannot dance, I cannot cook, I cannot entertain, I cannot do anything else. Maybe finance aata hai, so let's begin from the finance only. And that was a time when government launched some MSME schemes, and that's how I started educating people about MSME schemes. आत्मनिर्भर भारत पैकेज आया था उस वक्त, तो पीपल वर नॉट अवेयर कि कैसे उन चीज़ों को अवेयर करे, किसके लिए वो चीज़ें हैं, किसके लिए नहीं है. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. बाय उसी वक्त आईटीआर का भी टाइम था, और आईटीआर का जो डेट है वो पोस्टपोन हो गया था. जुलाई हुआ, फिर जुलाई से सितंबर हुआ, तो वहाँ पर एजुकेशन की कमी थी. पीपल वर ऑनलाइन, वो देख रहे थे सब कुछ, और उनको कंफ्यूजन थी चीज़ों के बारे में. ऑल्सो दे वांटेड टू नो कि वो कैसे अर्निंग कर सकते हैं, कैसे वो अपने ऑलरेडी अर्न हार्ड अर्न मनी को मैनेज कर सकते हैं. So that's how my Instagram, my TikTok account picked up, and I got million views very soon, and I got 300K in first 3 months only over there. Yeah, yeah. So that, And so that you was saw the start of content creation. Yeah, I mean, you saw a gap in this industry that there was nothing called as finance influencers. And I think you were one of the first people who started it. So, I mean, that takes a lot of guts to use your skill, your education, and then put yourself out there in front of the world. But kudos to you, and I'm sure so many of us, including me, have learned so much from you. You make it very simple and package it so cutely, so it's very easy to grasp. But Neha, now there are this whole finance influencing has become a small industry in itself. Do you think this was because of the pandemic that this industry became a little more sought after, and then people have started coming in and educating people about how to manage finance? What was that push that you think that, because I know it like how we have beauty influencers, finance influencers are not as many, but yet we see it on an increasing space. So what do you think is the future of finance influencing? Actually, it started way before pandemic. During the Jio time, Jio आया तो इंटरनेट आया सबके पास, and after that UPI भी आया, तो उसकी वजह से पेमेंट करना बहुत ईजी हो गया. So जो डिजिटल ट्रांजेक्शन्स थी, जो कभी महीने में एक होती थी, वो महीने में 10 या 30 होने लग गई थी. तो वो धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा था. बट जो उसको एकदम से पुश मिला, वो मिला था पेंडेमिक में, क्योंकि सब घर थे और चीजें ऑफलाइन से ऑनलाइन शिफ्ट हो रही थी. तो उस वक्त जब सब ऑनलाइन बैठे हुए, हर चीज ऑनलाइन हो रही, डिलीवरी हो, हर चीज, जो शायद किसी ने कभी अमेजोन ऐप डाउनलोड भी नहीं की, उसने लॉकडाउन में जाके कर दी. किसी ने स्विगी जोमेटो नहीं डाउनलोड किया होगा अभी तक 2020 तक, उसने अब लॉकडाउन में कर दिया. तो वो सब स्टार्ट हो रहा था पहले से ही, जियो से, यूपीआई से, और जो ईज आ गई थी चीजों को यूज करने की, कंजम्पशन बढ़ रहा था इंडिया, पहले से चीजें हो रही थी. लेकिन एकदम से कुछ मिला लॉकडाउन की वजह से, एंड वही टाइम था जब सब खाली बैठे हुए थे, और तब हम लोग आए, हमने उनको एजुकेट किया चीज़ों को कि आप यहाँ से पैसे अर्न कर सकते हैं, यहाँ इन्वेस्ट कर सकते हैं, आईटीआर, जीएसटी, पूरा एजुकेशन किया, तो उनको और इंटरेस्ट आया. इस वजह से हमारे नंबर इंक्रीज हुए. एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि 3 महीने में 3 लाख मेरे फॉलोअर्स हो गए थे. तो दैट वाज बिकॉज कि पहले से चीज़ें चलती आ रही थी, लेकिन पुश मिला उनको लॉकडाउन में, घर पे बैठ गए थे. तो उसके बाद फिर 2021 में एक ऐसा टाइम आया जब सब कुछ ऑल टाइम हाई पे था. स्टॉक मार्केट आईपीओ हो, फंडिंग हो, क्रिप्टो करेंसीज हो, हर चीज हाई पे था. जीरोधा की एक स्टेटमेंट थी कि जितना उन्होंने 7 इयर्स में सब्सक्राइबर बेस बनाया था, उतना उन्होंने 2021 में एक महीने में जो कस्टमर बेस था वो बना दिया था. दैट वाज बिकॉज जो भी अभी मैंने रीजंस आपको बताए थे. तो इसी वजह से हम फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स का रोल और ज़्यादा बढ़ गया, और हमारी जितनी वीडियोस थी उनको मिलियन व्यूज आने लग गए. और मी बीइंग द फर्स्ट और द वन ऑफ द फर्स्ट, तो हमें एडवांटेज डेफिनेटली मिला. बट ऐसा नहीं कि अब ये रुक जाएगी चीज़ें, बिकॉज अभी भी लोग कंजम्पशन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं. अगर इंडिया हमारी इकोनॉमी इतना ग्रो कर रही है, तो दैट इज ओनली बिकॉज ऑफ द कंजम्पशन ओनली. तो कंजम्पशन इतना हो रहा है. इवन इंटरनेट पे अभी 400 मिलियन यूजर्स है, तो 400 to 600 होने वाले आने वाले 1-2 साल में ही. तो डेफिनेटली सबके लिए बहुत ग्रोथ है, बहुत स्कोप है. अभी सिर्फ हिंदी इंग्लिश में अगर ज़्यादा क्रिएटर्स दिख रहे हैं, डेफिनेटली वो धीरे धीरे डिफरेंट लैंग्वेजेस में भी दिखेंगे.
तो इट्स जस्ट द बिगिनिंग, अभी से स्टार्ट हो रही है चीजें। और फाइनेंस का पर्टिकुलरली अगर मैं बात करूँ तो लिटरेसी रेट एज वी ऑल नो 24% ही है इंडिया में, तो 24 से 50 लेके जाना है। तो वो धीरे धीरे चीजें होंगी, जैसे सब ऑनलाइन आएंगे, हमारी वीडियोस देखेंगे, तो आई होप 50% भी जल्द से जल्द हो। No, absolutely. और you mentioned कि जब आपने start किया, very soon you got so many followers, people, your videos went viral. How was it? Because you mentioned in the beginning, your family had given up on your career, and from there to become one of the leading faces of financial education, how has it impacted you personally and your iterations? Honestly, I have become very confident because of the failures I have faced in my earlier career age. I was very insecure. I lost somewhat confidence in myself. So I used to question myself if I'll be able to do it. I had never given up. I have that attitude कि मुझे करना है. I was very determined. But I also used to question myself कि कर पाऊंगी कि नहीं. वो था माइंड में कि हाँ कर लूंगी. But day by day I used to ask. But today, even if I face any challenge, I have become very confident कि अगर ये कर लिया है, थोड़ा सा अपने नाम बना लिया है, काम कर लिया, तो I think अब मैं कुछ भी face कर सकती हूँ. And for 1 year, my family didn't know कि what I was doing, is it good, is it bad? They were very confused about it. क्यों कर रही है, कैसे कर रही है? But after 1 year, after they saw कि हाँ नेहा नागर कोई brand बन चुका है, so they also became very confident, very proud about myself, and people used to come to them कि अच्छा आपकी बेटी है क्या नेहा, आप नाम so it was a very good feeling, and it is a very good feeling even today also. No, of course, and you've become a role model for so many young girls and boys. So kudos to you. I feel so good about it because I always wanted कि girls को encourage करे. I come from a background जहाँ girls को इतना educate नहीं किया जाता है, and I was the first one from my family to do graduation actually. तो graduation करना भी बहुत बड़ी बात होता है हमारे फैमिली में. तो आई नो कि कितना इम्पोर्टेंट है गर्ल्स को आगे लेके आना, एंड आई फील वेरी वेरी गुड जब मुझे गर्ल्स आगे अप्रोच करती है कि because of you I have started this, because of you मैंने ये करना चालू किया. I have started thinking about myself. I have started thinking about myself as my priority. So it makes a big it makes me proud very much. And you mentioned about doing this for girls and women. I myself have somebody who is. I just find it so intimidating to manage my own finance. Like I have a younger brother who's not even working, and I have him take care of my money because I just don't know where to start from. It's all idhar invest karo, udhar mat karo. It's just so confusing. And I don't know, as female, we are wired in a way where probably we think that it's just better to hand over our finances and they'll take care of it, like first it was my father, now my brother started taking some interest. I'm like, you take care of it, you just make sure it's growing, that's all I want. What is your advice to anybody who's just started earning or saving, whatever, especially to girls? What can be our first step to financial independence? For brothers, for fathers or husband, I would say कि include your wife, your sister, your daughter in conversations of your house when you are talking about important decisions like house, car या finance का, because हमें बचपन से include तो नहीं किया जाता है इसमें, but धीरे धीरे start हो सकता है और ये अभी से start होगा कि we include them in our discussions. After that, if you have started earning, ये होता है हम सबके साथ कि अगर लड़की कमाना चालू करती है उसको लगता है कि भाई देख लेगा, हस्बैंड देख लेगा या फिर फादर देख लेंगे. दे ट्राई टू मतलब अवॉइड फाइनेंस वाले थिंग्स. बैंक का काम है तो भाई को भेज देती हूँ, बैंक का काम है तो ये कर लेगा, है ना. बट हमें खुद मैं बताती हूँ क्यों हमें खुद ये चीजें हैंडल करनी चाहिए, क्योंकि हमें कॉन्फिडेंस आता है, हमें क्लैरिटी आती है कि हम कितना अर्न कर रहे हैं, हम कैसे इसको मैनेज कर रहे हैं. उतने जितना भी अर्न कर रहे हैं उसको कैसे ढंग से मैनेज करके हम अपना आगे का फ्यूचर डिसाइड कर सकते हैं. जब हमें ये सारी चीजें नहीं पता होगी, जो इवन सिंपल सी चीज है बैंकिंग, और वो भी हम खुद नहीं करेंगे तो हमारे अंदर क्लैरिटी नहीं होगी. जब थॉट प्रोसेस की क्लैरिटी नहीं होगी तो हम लाइफ के डिसीजन अच्छे से नहीं ले पाएंगे. इवन फॉर लाइक ऐसा नहीं कि फाइनेंस पैसा डबल करने के लिए आप खुद मैनेज करो. अपना पैसा मैनेज करोगे तो आपको मेंटल सेटिस्फेक्शन ज्यादा होगी, क्लैरिटी होगी लाइफ के बारे में. कितने लोग फाइनेंशियल प्लान ही नहीं बनाते हैं. अगर आप फाइनेंशियल प्लान, इतना छोटी सी चीज है फाइनेंशियल प्लान बनाना,
अगर वो आप बनाने बैठोगे तो आपको लाइफ में बहुत क्लैरिटी आएगी और आपके कैसे भी डिसीजन होंगे, आप घर, गाड़ी, ये तो फाइनेंस के हो गए, जबकि आपके बाकी डिसीजन जैसे पार्टनर आपके लिए चूज करना या ट्रिप प्लान करना या फैमिली के साथ जब आप बैठे होंगे तो आप ज्यादा कॉन्फिडेंट फील करोगे। तो बहुत जरूरी है कि सबसे पहले अगर आपने अर्निंग चालू किया है तो अपना ना फाइनेंशियल प्लान बनाओ कि अभी ना आप यहाँ पर स्पेंड कर रहे हो और आपको जाना यहाँ पर है। आप 2023 में हो, आपको 2025 में मान लीजिए व्हीकल चाहिए होगा, अभी आपके पास कोई व्हीकल नहीं है, स्कूटी या गाड़ी नहीं है, तो उसके लिए आप कैसे प्लान करोगे, उसकी डाउन पेमेंट के लिए, उसकी ईएमआई आप कैसे पे करोगे। फिर आपको 5 साल बाद मान लो घर लेना है, घर नहीं लेना है आपको, आपको कोई फॉरेन वेकेशन पे जाना है जहाँ 1-1.5 लाख या उससे ज्यादा खर्च होने वाले हैं, तो उसका प्लानिंग आपको करना होगा। अब हम सपने सोचते हैं कि हम दुनिया घूम लेंगे जब हम कमाएंगे, लेकिन जब हम कमाने लगते हैं हम उसी में उलझ जाते हैं क्योंकि हमारे पास क्लैरिटी नहीं होती। कितने लोग ऐसे होते हैं जब उनकी अच्छी अर्निंग भी चालू हो जाती है, देन आल्सो दे डोंट डू थिंग्स जो वो सोचते थे कि हाँ हम ऐसा कर लेंगे, हम ऐसा करेंगे, बिकॉज क्लैरिटी नहीं है, बिकॉज उनके पास प्लान नहीं है। तो प्लान होना बहुत जरूरी है। आप लिखिए कि आपके गोल्स ये है, आप यहाँ स्पेंड कर रहे हैं, आपके पास इतनी सेविंग्स है, आपको 2025 में इतना चाहिए होगा। मान लीजिए अभी एमबीए करने के लिए 5 लाख लग रहे हैं, 2025 में 5 लाख ना लगे, 5.5 लगे या 6 लाख लगे, तो वो इन्फ्लेशन को भी आप कैलकुलेट करके लिखिए उसमें। एंड देन उसके लिए प्लान करें कि अभी मेरे पास इतना है तो उतना मेरे पास उस वक्त हो, उसके लिए मैं क्या करूँ। अभी मेरी अर्निंग है, इतनी बढ़ जाएगी, इतनी सेविंग बढ़ जाएगी, इतने एक्सपेंसेस बढ़ जाएंगे, तब मेरे पास आएंगे कि नहीं। तो इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपके पास क्लैरिटी हो। देन फर्स्ट प्लान आपने फाइनेंशियल प्लान बना लिया अपना। सेकंड, आपके पास इंश्योरेंस होना बहुत जरूरी है। इवन बिफोर इन्वेस्टिंग आपके पास इंश्योरेंस होना चाहिए, हेल्थ इंश्योरेंस आपके पास होना चाहिए। ऐसा कोई नहीं होना चाहिए जिसके पास हेल्थ इंश्योरेंस नहीं है। मेडिकल इन्फ्लेशन 10-12% है, विच इज वेरी ह्यूज। आपको 5-6 साल में बहुत पैसा लग सकता है अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस नहीं लिया तो। देन आपके पास अगर आप अर्निंग है, आप डिपेंडेंट है, तो आपको लाइफ इंश्योरेंस भी कंपलसरी लेना ही चाहिए। तो ये कुछ बेसिक चीजें बिफोर स्टार्टिंग इन्वेस्टिंग आपको चालू करनी चाहिए। ये 2-3 चीजें, फाइनेंशियल प्लान और इंश्योरेंस आपको लेना चाहिए। देन यू शुड जंप टू कि अच्छा अब मेरे पास इतना पैसा बच रहा है मंथली का, तो अब मैं इसको फाइनेंशियल प्लान जो आपने बनाया है कि आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या होने वाली है, गोल्स क्या क्या होने वाले, उसके अकॉर्डिंग यू कैन स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो यू कैन स्टार्ट फ्रॉम म्यूचुअल फंड, इंडेक्स फंड से स्टार्ट कर सकते हैं। देन यू कैन स्लोली जंप टू अदर म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स पिक कर सकते हो। तो वो बहुत बाद में आता है, बट पहले ही बेसिक चीजें आपको कंप्लीट करनी चाहिए। एंड यस, क्लैरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एज आई ऑलवेज से। To have clarity what you want, then plan towards it. Insurance, I think these are all ekdam basic steps hain which will help, and I think that's very, it's good that somebody is there in order to tell us these things, because otherwise it becomes really intimidating. But Neha, as a female in this industry, in the finance industry, do you think there were any unique challenges जो आपको face करने पड़े, which you think that maybe your male counterparts may not have faced? I believe in the industry, not in the industry, but in personal life, we मतलब फीमेल और मेल का करियर बहुत डिफरेंट होता है, बहुत ही डिफरेंट होता है। कितना ही हम बात करें इक्वालिटी की, कि फेमिनिज्म के बारे में बात नहीं करते, पर बहुत डिफरेंट करियर होते हैं हमारे पास। जैसे कि अगर एक फीमेल की 27-28 एज हुई तो उसको शादी के लिए पेरेंट्स जल्दी बोलने लग जाते हैं, उसकी शादी हो जाती है, देन उसको ब्रेक लेना पड़ता है, प्रेगनेंसी के टाइम पे उसको ब्रेक लेना पड़ता है, बच्चे को 6 महीने वही संभालती है पूरा, उसको ब्रेक लेना पड़ता है। तो ये तो बड़े बड़े एग्जांपल्स मैं आपको दे रही हूँ। उसके अलावा छोटी छोटी बहुत सारी चीजें होती है हमारे साथ जब हमें करियर के साथ थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है, कि अपने करियर को पीछे छोड़ के थोड़ा फैमिली को या बाकी चीजों को इम्पोर्टेंस देना पड़ता है। तो वहां डिफरेंस आ जाता है फैमिली को लेकर। बट एज यू टॉक अबाउट इंडस्ट्री या फिर करियर के बारे में आप कंपनी से बात करेंगे, तो वहां इतना डिफरेंस अब नहीं रहा है। एक्चुअली पहले पे गैप भी होता था डेफिनेटली। नंबर ऑफ फीमेल्स बहुत ही कम है हमारे पास, रोल मॉडल्स एक्चुअली फीमेल में बहुत कम है इंडस्ट्री में। किसी भी इंडस्ट्री में आप ले लो, वेंचर कैपिटलिस्ट ले लो, आप फाइनेंस की इंडस्ट्री में ले लो, बहुत ही कम फीमेल मॉडल्स रोल मॉडल्स है हमारे पास। तो डेफिनेटली रोल मॉडल्स होना जरूरी है, बट पर्सनल लाइफ में जितने डिफरेंसेस या जितने चैलेंजेस हमें आते हैं, आई थिंक कि मेल से इतना ज्यादा डिफरेंस करियर वाइज अभी नहीं है। No, but जैसे आपने बोला छोटी छोटी जो चीजें आती रहती है, which sometimes as females also we overlook, कि हमें वो पता नहीं चलता है कि डिफरेंस है, but actually we are facing that kind of discrimination. But yeah, I think power through, and probably after a few years there won't be such differences between male and female. But coming back to finance,
in our conferences, I.I.M.U.N में हम काफी हर इंडिया में छोटे छोटे शहरों में काफी कॉन्फ्रेंसेस करते हैं और वहाँ पे हम स्टूडेंट्स को एजुकेशन रिफॉर्म्स और ऐसी काफी चीजों के बारे में काफी डिस्कशंस करते हैं. And I think one point which is very important when जब हम education reforms के बारे में बात करें is teaching them about finance in mainstream education. I don't think our school has taught us even how to write a check. I remember getting shouted at by my father जब मैंने उनको पूछा कि कैसे check लिखना होता है when I was in college. So, what is your view on how education should change and what are the basic elements do you think that a basic education when a person is 18, a few steps that should be inculcated in our education? I believe एजुकेशन में जो हमारा करिकुलम है, जो हमारा कोर्स है, उसमें बिल्कुल भी फाइनेंस इंक्लूडेड है ही नहीं अभी. बट वी हैव हर्ड कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स ने अभी बोला है कि फाइनेंस को लेकर आएंगे. टिल देन हम फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स है एजुकेट करने के लिए, बट वी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स नीड टू कोलैबोरेट विद इंस्टीट्यूशंस, स्कूल्स, कॉलेजेस, ताकि हम जो 18 प्लस है या अंडर 18 है उनको भी फाइनेंस के कॉन्सेप्ट को समझा सके कि इन्वेस्टिंग अगर हम जल्दी चालू करते हैं तो कितना फायदा हो सकता है, कितना फायदा हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस होने से, कितना फायदा हो सकता है कंपाउंडिंग से, कितना फायदा हो सकता है बजटिंग जैसी बेसिक चीज से. बजटिंग तक नहीं सिखाते हैं हमें स्कूल में. तो बहुत बेसिक सी चीजें, 4-5 बजटिंग हो गया, इमरजेंसी फंड का कॉर्पस हो गया, हमारा फाइनेंशियल प्लान हो गया, ये सब तो हमें डेफिनेटली स्टार्ट करना चाहिए स्कूल्स में सिखाने, इवन 9th-10th उससे भी पहले से. बट अभी के लिए व्हाट वी कैन डू, हम इन्फ्लुएंसर्स ऑनलाइन ना सिखा के हमें ऑफलाइन भी कुछ वर्कशॉप, सेमिनार्स कंडक्ट करने चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट, स्कूल के साथ, कॉलेजेस के साथ मिलके, इवन गवर्नमेंट के साथ मिलके कुछ ना कुछ हमें ऑर्गेनाइज करना चाहिए. एजुकेशन में डेफिनेटली चेंजेस आने चाहिए. अभी हमारा जो फाइनेंशियल लिटरेसी का नंबर है, जैसे मैंने बताया 24% है, 50% जाना है. और वो ऐसा नहीं है कि हमें 10 साल या 15 साल में जाना है, हमें जल्द से जल्द जाना होगा, तभी हमारी डेवलपमेंट इंडिया की गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा अच्छी से हो पाएगी. तो जो एजुकेशन की आपने बात करी वो तभी होगा जब गवर्नमेंट थोड़ा सपोर्ट में रहेगी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स से, या फिर नॉट जस्ट विद अस बट फाइनेंस को जो करिकुलम है उसमें ऐड करने के लिए. एंड यू सी अभी जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है, do you think that is hopeful in changing the curriculum to increase? डेफिनेटली इवन अभी मैंने बताया गवर्नमेंट के काफी ऑफिशियल्स ने बात किया है कि पर्सनल फाइनेंस जैसे चैप्टर्स वो जल्दी 5th क्लास से ही स्टार्ट करने वाले हैं. तो मे बी 1-2 साल में ना हो, बट 3 या 4 साल में डेफिनेटली होने वाला है, क्योंकि we finance influencers also keep talking to government officials and we have also many times told them कि कुछ ऐसा स्टार्ट करते हैं, किसी फाइनेंस इन्फ्लुएंसर्स की कोई बुक अगर स्कूल करिकुलम में लग जाए, या फिर उनके जो यूट्यूब वीडियोस है उनका कोई क्लास लग जाए, या मतलब we have started giving them ideas and I'm sure government will take action on it. No, I mean that is going to be such a blessing for everybody and for the next generation. So looking forward that government listens to you guys and gets it done. But because आप इधर हैं Neha, we had to ask you about cryptocurrency because this is one of the most discussed agendas in all I.I.M.U.N conferences. Students always want to discuss about cryptocurrency and they are so enamored by it. And a lot of governments across the globe have included it in their regulations, have made laws around it. What do you think about cryptocurrency, its future in India, and do you see it at some point of time replacing the current use of currency that we have? Indian government is not in favor of cryptocurrency. Yeah. Definitely, we have seen they have taxed it at 30% bracket. And then also they are not so much friendly with the word cryptocurrency. They have launched their own digital currency. As you have talked about replacing currencies, it will not happen very soon. They will coexist. We can consider cryptocurrencies as an investment product. We can park our 5% of our portfolio into it because of its volatility. We can take some benefit, but otherwise it cannot replace currency. It will coexist with them. But do you think it is something which
can coexist and which the government can look at with a more kind eye? Indian government will not. We have seen Indian government talking about cryptocurrencies as a Ponzi scheme. We have seen many pump and dump cases also in the past, and it was at peak in 2021. So 2022 it went down very fast, 50%, 80%. So government is not in favor of cryptocurrencies, and we should be also very careful while investing in cryptocurrencies. Yes, we should park 5% of our portfolio into it because we can take benefit of volatility, and in the long run we may get good returns in cryptocurrencies as an investment product, and we should do thorough research before investing in any cryptocurrency. But yes, it cannot replace, or it cannot uh, replace currencies. So good to invest, but be very cautious and research properly before doing that. Neha, what we do is after, we'd love to take one or two questions from students as well. But before that, we play a short rapid fire with our guests. So I give you one word and you tell me the first thing that comes to your mind. The first word is financial management. I'm loving it. Threads, the new platform. Oh, experiencing it. Your first salary. It was very low, but I was very happy about it. Reading the fine print. Time taking. Favorite cuisine. Pizza. Favorite vacation destination. Somehow I always keep going to Rishikesh. I really love Rishikesh. And the Ganga Aarti over there. Correct. Yeah. India. When I say India. I want to travel. I haven't traveled much actually. And young people. Young people, future of India. Future. That's lovely. Very quick answers, Neha. But now, with your permission, can I add one student and can they ask you one question from their end? So many requests, but let me see if I can add someone. Okay. Hi. Hello, good evening, ma'am. Hello. Hi, what is your... Yes, ma'am. Hello. Good evening, ma'am. My name is Pavitra Das, and I'm pursuing BCom honors from Parul University, Vadodara, Gujarat. And as I'm having a commerce background, I have few questions. What methods or metrics do you use to evaluate the organization's progress, and what are the key elements to look at when evaluating the company's investments? First of all, we would look at sales, how their sales are growing. Then we will see, are they launching new product, are they relevant in the market still or not. Then we'll see the profit, if they are earning profit or not, or just burning cash. Then we will see the other things, but first these three things, if we are getting good numbers over there, then we'll figure out the complete balance sheet and everything else. But these three are the topmost which I look at. Okay, ma'am. Thank you. And I have one more question. Like, जैसे कि मैं commerce background से हूँ, I have some like financial problem. जैसे कि मुझे finance संभालना नहीं आता, and investments के भी like मुझे कुछ ज़्यादा कुछ idea नहीं है. Like where to invest, whether in SIP, whether in cryptocurrency, whether in stocks, or should I go for trading? Like I don't have any knowledge about that, but where to start? अभी आप I would say कि अभी आप अगर स्टूडेंट है then you should invest in yourself. कोई कोर्स लेना या आपके पे एक्सपीरियंस करना, ट्रेवल का हो गया, फ्रेंड्स के साथ हो गया, बुक्स खरीदना, सबसे पहले आपकी वो प्रायोरिटी होनी चाहिए, राइट?
फिर देन आप जितना भी सेव कर पा रहे हो, बजटिंग आपने कर लिया है, मैं ऐसा अज्यूम कर रही हूँ, अगर आपने बजटिंग कर लिया है, फाइनेंशियल प्लान जो एकदम फर्स्ट टॉप मोस्ट स्टेप्स जो मैंने अभी बताए थे वो पहले करने हैं आपको। आपने बजटिंग कर लिया, आपने फाइनेंशियल प्लान बना लिया, आपने हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, देन अब क्योंकि अभी आप पढ़ने ही नहीं है तो आपको लाइफ इंश्योरेंस का ऐसा नीड नहीं है, हेल्थ इंश्योरेंस ले लिया, देन आप देखो कि अभी ना आपकी मंथली इतनी सेविंग हो पा रही है, और आपने जो फाइनेंशियल प्लान बनाया है लॉन्ग टर्म का या शॉर्ट टर्म का, उसके हिसाब से आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे मान लो आपको लॉन्ग टर्म 5 साल बाद कुछ चाहिए, तो आपके पास टाइम ज्यादा है तो आप रिस्क ज्यादा ले पाओगे, तो आप वहां इन्वेस्ट करेंगे जहां पर रिस्क ज्यादा लेकर रिटर्न ज्यादा मिल जाएगा, जैसे स्टॉक्स में आपने इन्वेस्ट कर लिया है ना। अब आपका जो गोल है वो 2 साल का ही है, 2 साल बाद अभी आप ग्रेजुएशन कर रहे हो, फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करोगे, तो वो शॉर्ट टर्म हो गया, तो यहाँ पर आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी बहुत कम हो गई है ना। तो यहाँ पर आप कुछ ऐसा प्रोडक्ट चूज करोगे अपने लिए इन्वेस्ट करने का जहाँ रिस्क कम हो और आपको रिटर्न ठीक ठाक मिल जाए। ठीक ठाक रिटर्न कितने होते हैं? जो इन्फ्लेशन को बीट करते हैं। इन्फ्लेशन कितना है? 6%। 6% को जो बीट करते हैं, यानी कि 7, 8, 9%, तो दैट इज वेरी गुड रिटर्न। तो आपको भी वैसे प्रोडक्ट चूज करने हैं जिसमें लॉक इन पीरियड भी ना हो। तो म्यूचुअल फंड आपके लिए बेस्ट रहेगा इस वक्त। अब म्यूचुअल फंड कौन सा? डेट वाला, जिसमें रिस्क थोड़ा और भी कम होता है, या फिर इंडेक्स फंड आपने चूज कर लिया। अदरवाइज जो बाकी म्यूचुअल फंड है उनको टाइम चाहिए होता है, 5 साल का, 10 साल का, तब जाकर आपको वो 10-15% का रिटर्न देंगे, है ना। आई वुडंट से कि आपको डायरेक्टली कंपनी या स्टॉक्स पिक करने हैं। होता है कि आपने स्टॉक पिक किया, आपको 1-2 साल में, 1-2 महीने में अच्छे रिटर्न मिल गए, बट वहाँ चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। जबकि आप म्यूचुअल फंड, जो डेट म्यूचुअल फंड है या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड चूज कर रहे हो, वहां पर चांसेस आपके ज्यादा होंगे कि आप 7-8% बना ही लोगे। तो अभी जैसे मैंने बताया सारे स्टेप्स के अकॉर्डिंग, कि पहले अपने ऊपर इन्वेस्ट करो, देन अपना फाइनेंशियल प्लान, फिर अपना इमरजेंसी फंड, अपना हेल्थ इंश्योरेंस, देन अपने जो प्लान है उसके अकॉर्डिंग आप अपना थोड़ा एसआईपी स्टार्ट कर दो इंडेक्स फंड्स में या फिर हाइब्रिड म्यूचुअल फंड्स में। ओके, ज्यादा थैंक यू मैम। आई वुड से कि स्टूडेंट को ज्यादा इधर उधर ऐसे होने की जरूरत नहीं है, बहुत फोकस होकर अपना जो काम कर रहे हो वो करो, और इन्वेस्टिंग ना टेंशन फ्री होनी चाहिए, तो वहां इन्वेस्ट करो जहां पर आपको ज्यादा हमेशा बार बार चेक करने की जरूरत ना पड़े, क्योंकि अभी आपका जो मेन फोकस है वो एजुकेशन है, नॉट अर्निंग मनी या फिर कोई और चीज। यस मैम, थैंक यू मैम। ओके। Yeah, I love the point where you said that as a student you should invest in yourself. I think that is the biggest takeaway, and which was very well. We are so very grateful that you could do this, and India needs more people like you who candidly and boldly take up such challenges and help so many young people find their financial freedom, especially women. So thank you once again on behalf of all of us from I.I.M.U.N and Parallel University for doing this. And it's been such an honor and a pleasure. Thank you very much. Thank you so much, team. Thank you. Bye bye, everyone.